Hello students, this is Kashyap Tutorials and myself Pravakar Acharya. Now, students, we are discussing about Suchna Anusaram Kriti Kuruta, that is fifth part of entire Sanskrit paper. And here we discuss, I have released three videos and this is fourth one where I'm going to talk about Twant Levant Nishkasayada. That means remove Twant Levant Avyay. So first we'll see its rules कैसे बनाया जाता है, इसका क्या रूल्स है और कैसे इसको निकालेंगे तो क्या सेंटेंसेस में चेंजेस आएगा. So let's start with answers. First, the points I will discuss. Twant levant is a suffix that indicate past tense, means previous action. Next is twant levant is always added with verb root, means मूल धातु के साथ में इसको हमेशा ऐड किया जाता है. Next point is if the same subject means karta performs more than one act in a sequence, all the acts, verbs forms, acts means verb forms, except the last one can be expressed in gerund form. That means twant levant. So, अगर सेंटेंस में कर्ता सेम है लेकिन वो एक से ज़्यादा एक्शन कर रहा है वो भी सीक्वेंस में कर रहा है तो सारे वर्ब्स फॉर्म्स है वो त्वांत और लेवंत के फॉर्म में चेंज होगा सिर्फ लास्ट वाले को छोड़ के. नाउ फर्स्ट विल सी अबाउट द जेरेंट. सो जेरेंट के कितने टाइप्स है. सो जेरेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. जेरेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज त्वांत जेरेंट. So Twanjaran is performed by adding the suffix twa to any root. अगर Twanjaran मुझे बनाना है Twan फॉर्म बनाना है तो मैं किसी भी रूट में इसको ऐड करके ज्वाइन करके बना सकता हूँ. सेकेंड टाइप इज लेवंतव्य. Levanjaran is performed by adding the suffix yo to roots when they have a prefix upsarg like pra, upa, a, etc. For example, pra adhik stha adhik ya, that become prasthaya. So here is prefix, so levantavya. Next, when upapads like svi, alam, etc. are prefixed to the root, we get levant forms like svi adhik, kru adhik, ya, svikritya. Means when उपसर्ग like svi, alam, etc. are there as a prefix. रूट के पहले अगर उपसर्ग है जैसे svi, alam, etc. तो वहां पे लेवंत अव्यय का यूज होगा. I first want to tell you that twant और लेवंत give same meanings. अगर सेम मीनिंग देता है तो फिर दो टाइप के सफिक्स का क्या यूज है. तो उन्होंने यही बताया कि त्वंत अव्यय कभी भी यूज होगा डायरेक्टली टू द वर्ब जहाँ पे प्रेफिक्स नहीं है बट लेवंत का प्रयोग वहां पे होता है जहाँ पे प्रेफिक्स होता है वर्ब से पहले. तो नेक्स्ट, if the root is having short vowel then tya is added instead of ya. It is about लेवंतव्य कि कहाँ पे य ऐड करना है कहाँ पे त्य ऐड करना है. So this rule is about that if the root is having short vowel means short vowel means ह्रस्व स्वर रहेगा verb में तो वहाँ पे त्य ऐड करना है हमें य के जगह पे. Example is अनु अधिक क्रू. So anu is prefix, kru is a root and इसका form होगा अनुकृत्य. So you can see instead of अनुक्रिय it is अनुकृत्य. तो तो कहाँ से आया और क्यों आया तो इसका आंसर है क में रू छोटी है short vowel है that's why. Another example is vi अधिक श्रु. So again श्रु में ऊ की मात्रा short है छोटी है so it become विश्रुत्य. Now what is gerund? So it is serious. Gerund are indeclinables. Gerund को indeclinables कहते हैं. A gerund is derived from a verb and it is used for an act which precedes the main act. Therefore, it is called पूर्वकालवाचक धातु साधित अव्यय.
मीन्स जेरंड का क्या होता है कि ये वर्ब से बना होता है और ये एक्ट जो बताता है प्रेसिडेंस, मतलब एक के बाद एक हो रहा है, लेकिन प्रीवियस एक्शन जो हो चुका है दैट बिकम पास्ट टेंस, इसीलिए इसको कहा जाता है पूर्व कालवाचक धातु साधित अव्यय. Now the next point is a gerund cannot be used if the two acts are performed by different subjects. Means the actions are more than one, but the subjects are also different. Means एक ही person नहीं कर रहा है सारे काम, और different different work कर रहा है अनेक different subject के द्वारा, तो वहाँ पे आप gerund का प्रयोग नहीं कर सकते हो. Next, now if it is asked to remove त्वांत और लेवंत अव्यय, जो बेसिकली ये क्वेश्चंस आते हैं 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में. सो if it is asked to remove twant levant, means that means twant levant avyam niskasayata, so that type of questions will come, then that means all the verb forms will come to its original form. twant और लेवंत आपको ड्रॉप करने के लिए कहा जाएगा, तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, बट इन विच टेंस. सो see next point. Kriyapad means verb form will be in the same person as well as in the same number, means vachan, according the main verb of the sentence. Means suppose it is asked to drop त्वांत और लेवंतव्य, तो मैं जो ड्रॉप करूंगा तो उसको प्रॉपर फॉर्म में लाऊंगा, तो किस टेंस में लाऊंगा, किस नंबर में और किस विभक्त पुरुष में लाऊंगा. सो ये डिपेंड करता है उस सेंटेंस के लास्ट वर्ब के ऊपर. आई हैव टू चेक the last verb of a sentence, that's person, that number, as well as that's tense. Next is additionally indeclinable ch will be added after last verb. जब सेंटेंस हम ट्वांत और लेवंत ड्रॉप करते हैं तो वो ड्रॉप करने के बाद में लास्ट वर्ब जो रहेगा सेंटेंस का, उसके बाद हमें च भी ऐड करना होता है. दिस इज कॉल्ड indeclinable. नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन सी छात्रः उत्तरं पठित्वा लिखति. So here the highlighted word is patitva, that is twantavya, because you can see pat से पहले कोई भी prefix नहीं है. So it is the subject is chhatra who is performing two actions. First is reading an answer and then he is writing it. तो पहला एक्शन में त्वंतव्य यूज किया गया और इसको ड्रॉप करने पर हमें प्रॉपर फॉर्म में लाना है. तो एज लिखति इज लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो नेक्स्ट पठित्वा का भी प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार का ही हमें प्रयोग करना होगा. सो सी इन द above एग्जाम्पल लास्ट वर्ब इज लिखते, मीन्स ये वर्ब के बारे में बात हो रहा है. लास्ट वर्ब इज लिखते विच इज लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन. इट इज लिखति ती indicate that this is present tense. प्रथम पुरुष and ती also indicate that this is pratham purush, and ti also indicate that it is ekvachan. So the person and the number of pat will be the same like likha. So it become, its answer will become छात्र उत्तरम पठति लिखति च. So आपको ये चेंज करने के बाद में च भी ऐड करना है. सपोज बाय मिस्टेकली यू फॉरगॉट टू राइट देयर च, आपने जस्ट लिखा छात्र उत्तरम पठति लिखति एंड देन फुल स्टॉप, आपने च नहीं लिखा तो आपका आधा मार्क चला जाएगा. सो आपको च भी लिखना जरूरी है. सो दिस वे यू कैन राइट द आंसर्स. सो दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रूल टू यूज रूल टू यूज त्वांत. So rule is means इसका नियम है मूल धातु अधिक त्वा. Means suppose you want to make twantavya, then its a rule is only original root will be there and after that twa will come. So suppose gum is original root but गच प्रयोग होता है तो हमें गम ही लेना है, तो गम अधिक त्वा गत्वा. Next one is example you can see here पठ अधिक त्वा, it become पठित्वा. तो आप देख सकते हो ओरिजिनल वर्ड में त्वा ऐड हुआ है. रूल टू यूज लेवंत अव्यय. अगर मुझे लेवंत अव्यय बनाना है तो उसका नियम है उपसर्ग अधिक मूल धातु अधिक य. मीन्स उपसर्ग रहेगा
उसके बाद में मूल धातु फिर य ऐड करना है, दैट इज लेवंत अव्यय. सो दिस इज द रूल ऑफ लेवंत अव्यय. यू कैन से एग्जाम्पल आ अधिक गम अधिक य. So I is prefix and after that root is gum, so levantavya is added. So agatya means after coming, by coming. So these are the sentences, these are the examples. Now in the textbook of an entire textbook, what are the sentences given? Those sentences are written here together with the answers. So see the answers and how to write, that is a rule. Then and prepare it. That will help you to get full marks. Sentences asked in the textbooks. So this is the title of this part. पूर्वकालवाचक त्वांत अवयव निष्कास्यत. This instruction you will get in the bracket. The first sentence is पृथुवन्यस्य निःस्पृहतां ज्ञात्वा स्तुतिगायकाः प्रसन्नाः अभवन्. So here the word is highlighted, that is त्वान्तव्य, and the main verb is here, last verb is abhavan. So while I'm going to change it, gyatva, I'm going to convert its a tense, I'm going to convert it in a proper form. Then I have first to check original last verb is a person, is a tense as well as number. So abhavan is lang lakar pratham purush bahuvachan. So gyatva का भी lang lakar pratham purush bahuvachan होगा. Now see the answer. पृथुवन्यस्य निःस्पृहताम् अजानन् स्तुतिगायकाः प्रसन्नाः अभवन् च. So अजानन is प्रथम पुरुष बहुवचन of लंग लकार according to अभवन, and लास्ट में आप देख सकते हो च. नेक्स्ट सेंटेंस इज भूमिः स्त्री रूपम धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत्. So धृत्वा is त्वान्तव्य and I have to change this word in a proper form according to last verb of this sentence. So last verb is abhavat, that is lang lakar pratham purush ek vachan. So this word also will convert into lang lagar pratham purush ek vachan. So answer is bhumi stri rupam adharayat tasya purtah prakatita abhavacha. So adharayat tasya purtah prakatita abhavacha. So adharayat is also in pratham purush ek vachan of lang lakar, and cha is added at the last. Now the next sentence. Next sentence is Mrugaha pratyaham tatra gatva sasyam akhadat. So gatva is tvantabhya, and I have to convert this tvantabhya form in a proper verb form according to the last word. So here the last verb is akhadat, and it is also lang lakar pratham purush ekvachan. So gatva also will convert into lang lakar pratham purush ekvachan, and the answer is mrugaha pratyaham tatra अगच्छत सस्यम अखादच. सो आप देख सकते हो, और कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ त्वांतव्य जो है वो प्रॉपर फॉर्म में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज अखादत भी प्रथम पुरुष एक वचन लंग लकार है और उसके बाद में च ऐड किया गया. नेक्स्ट इज तयोः विवादम श्रुत्वा सुदासो व्यमृशत. So here is Twantavya is Mr. Gerund is Shrutva, and Vyamrisat is the original form which is in Lang Lakar Pratham Purush Ekvachan. So the answer will be Tayoho Vivadam Ashrinot Sudaso Vyamrisatcha. So why Ashrinot? Because the last verb is लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो ये भी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कन्वर्ट हुआ और च लास्ट में ऐड करना ही है. In the all sentence, in the all answers, you can see while I dropped twant or 11th abhyay, cha I have added, I have written cha at the last, after last verb. The next one. रावणः खड्गमुद्धृत्य पक्षो अच्छिनच्च means पूर्वकालवाचक अवयव निष्कास्यत. Again question you can see, and here the 11th abhyay is udhritya, खड्गम udhritya, and the last verb is achinat, that is lang lakar pratham purush ek vachan. So udhritya also will convert into lang lakar pratham purush ek vachan, and the answer is, sorry, by mistakenly the sentence, second sentence came first and then
the previous sentence. So I'll tell you about the second sentence here, U part answer, and then I come to U first previous sentences. So Ravana Khadgam Udhritya Paksho Chinat, its answer is Ravana Khadgam Udharat Paksho Achinnacha. So Udharat, because रू से बना हुआ है उत अधिक रू, तो उदहरत, it is लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन according to अछिन्नत. And the previous sentence is अर्णवः जपाकुसुमं गृहीत्वा प्रविशत प्रविशति. So अर्णवः जपाकुसुमं गृहीत्वा प्रविशति. गृहीत्वा is त्वांतव्य and प्रविशति is proper form which is in lat lakar pratham purush ek vachan. So गृहीत्वा also will convert into lat lakar pratham purush ek vachan. Now the answer is Arnabah Japa Kusumam Gruhanati Pravisati cha. So Gruhanati, because Gruha is 9 UP forms. So Gruhanati Pravisati cha. Accordingly, it is a form is a lat lagar pratham purush ek vachan. Now the next sentence is Matre Pratishrutya Sah Gruhat Nirgachat. So Purvkalvachakam Niskasyata. Here the Purvkalvachak form is Pratishrutya, where it is used Levantabhya form, and the last verb is nirgachat. It is lang lakar pratham puruष एक वचन form. So प्रतिश्रुत्य को भी lang lakar pratham puruष एक वचन में convert करना होगा, and the answer is मात्रे प्रत्यश्रुणोत सह गृहात निर्गच्छत च. So प्रत्यश्रुणोत, प्रति is prefix, lang lakar का ओ आने से यहाँ पे यण संधि हुआ, and it become प्रत्यश्रुणोत, which is lang lakar pratham puruष एक वचन, and at last you can see च. The next one is Saha Mahodiyam Upagachati Vadati Cha. Here Saha Mahodiyam Upagamya Vadati. The sentence is Upagamya Vadati. Upagamya is Levantavya. Vadati is proper form which is in Lat Lakar Pratham Puruष एक वचन. So Upagamya को भी हमें Lat Lakar Pratham Puruष एक वचन में convert करना है. And you can see answer here. Saha Mahodiyam Upagachati Vadati Cha. So Upagachati, up is prefix, and Gam Gacha, so T will come because it is Pratham Purush Ekvachan. So these are the answers of 11th Abhyay which are given in the textbook of entire Sanskrit. The uh, last sentence of this 11th Abhyay form is Sarv Dharman Parityajya Dhruvam Manavtam Bhaja, from the last chapter. So here the Purvkalvachak form is Parityaja. Parityajya. So Parityajya is 11th Abhyay, and we have to check the last verb, that is bhaja, lot lakar, मध्यम पुरुष एक वचन फॉर्म. सो परित्यज को भी हमें मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार करना होगा, एंड इट्स आंसर इज सर्वधर्मान परित्यज ध्रुवम मानव ताम भज, बिकॉज परि अधिक त्यज विच इज वन पॉपर. सो परित्यज इज मध्यम पुरुष एक वचन फॉर्म. सो वंस अगेन सी सर्वधर्मान परित्यज ध्रुवम मानव ताम भज च. So these are the answers of the sentence of the questions given in Sanskrit textbook for do as directed. So I hope it will be helpful for you to prepare the sentences and its answers and understanding by watching this video. So thank you for watching this video, and please subscribe it, and also suggest your friend to watch this video, which will be helpful and help you to get good marks in board examination. Thank you.